Okay, so I'm going to tell you about array of structures. As you have seen that when we need more than one element of similar kind, for example, as we have stored the weight of all students in the class or age of all students in the class, we need to use the array of that particular type. For example, we want to store the suppose weight of students or age of students. Okay, so we need to declare an integer array to represent the age of all students, because the student age of one student will be represented by one integer, but when we want to represent or we want to store the age of all students in the class, then we will require an array of integers. Okay, when we were just dealing with individual elements like age or weight or any other information. So for that purpose, we need an array. Advantage of arrays that we can use arrays within a loop to scan or to print all the elements with a single statement. ये आपका array का advantage है. If you declare 100 elements to represent age of 100 student, then you will require 100 scan statement and 100 print statement to print or scan the values. But when we are using array, then we can store all the values in a single array variable with different indexes. So that's why we use array, because array facilitate the storage of data and fast access and retrieval. Okay, so for that purpose, we are going to use the array. Here, when we are dealing with real world data, for example, we are dealing with the data of students. So for that purpose, we have created the structure to represent a student, because this further facilitates the storing corresponding data of a student in one variable. As you know that when we were कौन बीच में प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देता है. So we were using arrays for storing data of many students, and we have created the structure to represent the real world data of a student. Okay, for that purpose, we have created structure. Now we want to store, as you know that one structure variable will contain the data of one student only. And if you want to store data of 100 elements or 50 elements, whatever the size of class, then you need to create that much number of variables. Or the other thing that you can do is you can create the array of students. So this is the reason behind the usage of array of structures. So since this data type that we have created, that is called user defined data type struct student, this is also a data type. So you can create array of structures as you create the array of integers. So for same guidelines, you can create the array of structures. Okay, so the syntax is also same. You need to define, when you want to define a single array, then you can write x
This is a single structure variable. And when we want to define an array of structure variables, you can specify the size within square brackets. So this will represent the array of 100 students. You can see that this y is representing array of 100 students in this statement. Okay. So now this y will contain data of 100 students starting from y0 up to y99. So y0 will contain data of first student, then y1 will contain data of second student, and so on. So in this fashion, you can create the array of structures. And how to access the members of this array of structure. So as you know that I am telling that we have created an array of 100 students, and one student will be represented by name of array, that is y, and index of the student. Okay, so it may be y0 or y1 or y2 or y99. So it could be anything. Okay, so in this fashion we are representing the particular element of the array. First we will need to access the one cell of the array, and then one cell has been accessed, like y0 or y1 or y2 or y5, any cell. So we will be able to access members of that particular cell, because each cell is representing one structure in the array. अगर आप यहाँ पर देखें तो जो हमने array declare किया है, this array जो array हमने यहाँ पर declare किया है, ये आपका array जो है वो structure का array है. So each cell of array will represent one structure, and each structure is composed of many different data types. Okay, so if we want to access name or age of a particular student, for example, x is a normal variable. This is not an array. You can see here, x is not an array. So if we want to access the name of student x, then we can access using x.name or x.age to access the age of student x. Similarly, if we want to access the members of array, for example, we want to access the name of sixth student, so it may be y5. y5 is representing the sixth cell of the array. So this is each cell is representing an array. So y5 is the an array, a cell of the array, and then we are representing the member of the array, member of the structure. So y5 dot name. As you can see, x is a single variable, so it has been represented as x only, and y is an array. So to represent one cell, we need index of the array element. So we have specified y5, or similarly we can specify y2 or y3. Any cell can be represented with the help of index in the array. तो आप array use कर रहे हैं, उस array की कोई भी cell, particular cell आप access कर सकते हैं in this manner. Okay. So when we are going to scan all the elements in the array, अगर आपको array के सारे element scan करने हो, for example, we want to declare a student say I am considering the same definition y, and say I am declaring only 5 elements in the array. So this y5 is representing array of 5 students. Okay, we can initialize if you want. We can initialize. It will be initialized in the same fashion as array has been initialized. Just see how to initialize array of structures. You can initialize in this fashion. Each member of the array will represent a structure. Okay, so we need to represent in this fashion. This is initialization of the array, this whole array. Okay, and within this array, must close.
ये हमने एरे क्लोज कर दिया जिससे हम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Now this is initialization of array. We need to specify each member of the array, and each member is being represented by a structure. So each structure is represented by 5 elements or 4 elements. We have taken, I think, 4 elements. Name, we have written like this. Then address, something address. Then age, 17 suppose. And then we have fees of the student. It was 0.5. Okay. So it is data of one student. We should close it. This is representing one cell of the array. Now we need to represent array of second cell, data of second cell. Second cell will again contain some name. Say this is QWER. This is the name. Now address ASDF. ये आपके पास ये small में लिख दिए ASDF. ये आपके पास एड्रेस हो गया. And age of student, say age is 18. Then fees of the student, maybe fees is same for all students. Okay, so this is data of second element, second cell. Then again comma, again brace here. We need to represent the data of third cell, again an student. So we need to provide the data for third cell of the array. So we have to specify data again. For example, the name is something like this, then some address, then age of student, and fees of student. Maybe student is residing in hall and is depositing more. This is data of कितने हो गए? 1, 2, 3. 3 एलिमेंट का डेटा हो गया. Then data of fourth element. यहाँ पर आप स्पेसिफाई करें डबल कोट्स में आपको नेम स्पेसिफाई करना है. So this is the name, comma, this address, and 19. This is age, and fees may be same, or you can specify any value. This is data of fourth student. Is clear? 3 4. Okay, or you can take it also in the same line. So we have specified till now 4 members. So we need to specify one more, comma, again name of student, whatever is the name, maybe this is the name of student, then some address, this is address of the student, then age, again 17, age of student, fees, because now fees has changed to dot 0. Okay, this is the fee of fifth student. So we have initialized all the data members of the array. Okay, we have initialized all members, and each member is one cell of the array. So here you have declared array of 5 students. So we have defined a 5 student array here, and now we have to initialize. If we are going to initialize, then we can initialize in this fashion. First cell will be initialized with the data of one structure, and structure is having 4 different members, so you have to specify all the 4 members. So here I have specified all 4 members. Then second cell, again in the similar fashion, third cell, fourth cell, and fifth cell. So all cell have been initialized. So it means you have initialized the structure array. Okay, so we have defined and initialized. जो हमारे पास स्ट्रक्चर था उसको हमने डिफाइन भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, एंड दिस इज द सेमीकोलन. ओके, so this is end of initialization.
Here we have initialized. Now if we want to print the value of all the members of the structure, ये आपने जो 5 structures define किए हैं, जो मैं आपको बता था use of array of structure. So how can you use कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं? So just see, I am using a for loop. We need an interior also. I'm not writing the whole program. I'm just telling you how to access. Suppose I is in integer declared somewhere in the program, already declared. So for I equals to 0, I less than 5, I plus plus. This is our for loop. Now in the body of loop, I'm going to print the data of student in a formatted form. Okay, formatted आपको पता है तो formatted means कि हम उसको with the proper information print कराएंगे. Name will be printed as name. Okay, so printf. This is the name percent s. Then new line. What we need to print? Address. Address percent s. Again new line. Then we have to print what age percent d. Sorry, specify the information age percent d, and again new line session, then colon percent f was specified as floating point value. Okay. So this is the vector of print statement. तो आपको सारे वेरिएबल्स स्पेसिफाई करने हैं which variable you want to print. नेम आपको किसका चाहिए? You want the name of y. This is name of the array, which y is representing array of student. So we need to specify which element of the array. So which element you want to access? yi. This is the index of the student. So we are going to access data of ith student. Okay. So we have specified yi dot name is represented by name, comma yi dot address के लिए लिया था हमने. Okay. I dot age के लिए लिया था, comma I dot fees. Okay. So we have taken the variables in this fashion, and we need to need not do anything because this is for loop. ना तो आपको I की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, ना आपको कंडीशन लगानी है. इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और मॉडिफिकेशन सारी चीज़ें जो है वो आपकी एक ही स्टेटमेंट में हो गई हैं. ओके, सो वी जस्ट नीड टू क्लोज इट. ओके, let me show you by running this program. Okay. Control C. I'm starting CodeBlocks now. Okay.
Is it visible now? I'm showing the CodeBlocks window. Okay, so this was the definition of our student variable. आप उसे यहाँ से जाते हैं, पहले तो डेटा तो इनिशियलाइज किया था और इस डेफिनेशन को हम जो है बाहर ही निकाल दे रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था किस तरह से हम उसको यूज करेंगे. ओके, so this was anonymous and I'm giving the name student struct student. So this is the definition of structure student, and this is our main function where we have defined defined an array of structure. So this is 5-element structure, and we have initialized the array of structure को हमने initialize किया. So you can see that this is representing one element of the array, and each element of the array is itself a structure, so it has been separately initialized. This is one element. आप array को इसी तरह initialize करते हैं, पहला element specify करते हैं, comma लाकर दूसरा element specify करते हैं, तो each element has been specified within braces, and within braces this is itself a structure. So we have specified 4 different values. Okay, so first value will go into first structure, second into second structure, the second cell of the array. Okay, so in this fashion your whole array will be initialized. Now I'm just going to print the value of all the element to check whether we have initialized it correctly or not. Well, main is not returning any value. You can specify the return value also. अच्छा, यहाँ तो हमें रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं होती. This is good practice to return something. You can specify return 0. Now compile and run. What is the I has not been initialized. You can see the error. Error I undeclared first use in this function because I has not been initialized. आपको कोड ब्लॉक्स की विंडो दिख रही है, वही आप पिछली विंडो देख रहे हैं. Okay. So I was telling that I error इस वजह से आ रहा है कि हमने I यूज किया और I को डिक्लेयर नहीं किया. So we need to declare I. Here I am going to declare I int I. Okay. Now I shall run this program. You can see the output. The first element A B C D F address and then age and then piece. इसमें न्यू लाइन नहीं देते, एक मिनट में एक न्यू लाइन और लगा दूं इसमें. एक न्यू लाइन जो है शुड बी प्लेस्ड हियर. क्या इसके बाद ना लगा, बल्कि आपका जो लास्ट फी स्टोर किया इसके बाद लगा देते सो दैट न्यू एलिमेंट विल बी प्रिंटेड इन द न्यू लाइन. Control S and run the program. Is it better now? First name is printed, then address is printed, then age is printed, then piece is being printed. This is data of first student, then data of second student. You can see the ages are printed correctly, 17, 18, 18, 19 and 17 as I have mentioned. You can see the fees is also 1234.5, 1234.5, 1258.5, 1234.5 and 1688. Okay, so we have initialized it correctly. This is the advantage of using a structure and then array of structure. One structure can represent data of one student, but when we want to represent data of many students, for example, you want to represent data of a whole class, then you can declare an array. And the advantage of array is that
we have just written a single statement, and this statement is enough to print data of all the students. आप लोग अपना माइक जो है बंद कर लिए। एक ही लाइन से हमने जो है सारे स्टूडेंट का डेटा प्रिंट कर दिया। अब आपके पास जो फॉर लूप है इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, यू कैन रन इट फ्रॉम 0 to 100 और एनी वैल्यू। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स। क्या क्या करें? आउटलाइन विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है? यस सर। नो। The screen is visible, but the output is not visible. Yes sir, visible है। अब देखिए, अब आउटपुट में आपको बता दें, मैंने 5 एलिमेंट का एक एरे लिया था, उसको इनिशियलाइज किया और उसे प्रिंट किया। तो यू कैन सी द आउटपुट दैट वी हैव इनिशियलाइज्ड इट करेक्टली। पहले एलिमेंट का आप देखें। Sir, your voice is not clear. अब आ रही? Yes sir. कनेक्शन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, स्पीड कम होने की वजह से भी वॉइस डिस्टर्ब होती है और मेरे एंड पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो अब आप देखें यहाँ पर जो आउटपुट है हमारा, उसमें नेम स्पेसिफाई किया है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। तो हमने यहाँ पर अपने आउटपुट को फॉर्मेट किया है सो दैट ईच डेटा इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट इट इज। ABCDF, this is name of student, then I have printed the address of student, then age of student, and then fees of the student. So 4 data have been printed in for one student. Okay, then second data, then third data, then fourth data. So in this way we have printed all the data members of the array. जो आपके पास array था उसमें 5 एलिमेंट थे, सारे एलिमेंट का डेटा हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। Is it clear? सारे स्टूडेंट का डेटा जो है यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया है। इस तरह से हम इसको अपने स्ट्रक्चर के एरे ऑफ स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। यू कैन सी जो सिमिलैरिटी है, अगर आपको कोई इंटीरियर एरे डिक्लेयर करना होता है सो यू विल स्पेसिफाई लाइक दिस इंट, सपोज दिस इज A5, ये आपका नॉर्मल एरे है, इंटीरियर एरे। इसमें आप कैसे एलिमेंट स्पेसिफाई करते हैं, विद इन ब्रेसेस करते हैं। आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होता है कौन कौन से, जो सारे एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5. So in this fashion you initialize an interior array. Now here we are going to initialize array of student. So this array can be initialized by individual elements. So we have a specified brace for representing the data of array, and then inner जो elements हैं आपके पास, they have been again represented in pair of braces. Okay, and each pair of braces representing data of one student. So we have specified all the data members: first member, second member, third member, and fourth member. Similarly, this is done for all 5 members. So this is the initialization of structure, and this is traversing the array. हम यहाँ पर array को traverse कर रहे हैं. Each element has been visited, and we have printed value of each student. Okay. You can be asked to search for a particular student. आपको ये भी कहा जा सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च करना है। अगर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ओनली देन यू हैव टू प्रिंट द डेटा। तो प्लीज नोट, आप लोग अपने पास इस बात को चाहे तो लिख लें इस क्वेश्चन को।
अभी तो हमने डेटा इनिशियलाइज किया है और सारे डेटा मेंबर्स को प्रिंट कर दिया. दिस इज सिंपल. यू मे बी आस्क्ड टू प्रिंट डेटा ऑफ ओनली अ पर्टिकुलर स्टूडेंट. जो आप सर्च करेंगे सिर्फ उसी स्टूडेंट के बारे में भी कहा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर डेटा को आप प्रिंट करें. For example, you may be asked to print the data of QWER. Maybe this is the name of a student. So for that case, you need to uh, scan which element is needed. You may be asked to search for a particular student. Okay. If you are going to search, then you will print message, enter name to search. आपको किस स्टूडेंट का नेम सर्च करना है, उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है. यहाँ पर मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, सो दैट यू नो व्हाट वी हैव टू डू. देन वी हैव टू स्कैन गेट्स. इस वजह से स्कैन कर रहा है योर नेम में कंटेन मोर देन वन एलिमेंट और मोर देन वन पार्ट इन द नेम. फॉर एग्जांपल ABCDEF. इसके लिए एक वेरिएबल भी चाहिए. You can character. Suppose this is name. This name is different from the name declared in the. You can say there's another variable name, but this name is part of structure. So this name and the name declared in main, they are in different scopes, so they will not clash. So I can declare a variable name and size may be mentioned. Suppose this is 30. Okay. I am going to scan the name. Name को आप get scan कर रहे हैं, scan हो गया. Now I am going to search this name in the array. जो आपने array लिया है उस पूरे array के अंदर आपको इस particular name को search करना है. So how to search? We will compare this name that we have just read with each member of the array. Okay. और string compare करने, name is a string or the character array. To compare names or to compare strings, we have predefined string library function. Since we have to use string library function, we need to include the string library also. Hash include which library? String dot h. Okay. We have included the string library. Now we have to compare if strcmp string कंपेयर कर रहे हैं. किस स्ट्रिंग को कंपेयर करना है? नेम को कंपेयर करना है. और किससे कंपेयर करना है? नेम जो अभी हमने स्कैन किया है, एंड वी वांट टू कंपेयर इट विद yi dot name. yi is the member of the array. Which member? ith member of the array. And which part or which member of the structure? So वो जो yi हमारी सेल है, जो yi हमारा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का कौन सा मेंबर, उसका हम जो है नेम मेंबर यूज कर रहे हैं. सो वी आर कंपेयरिंग नेम विद नेम. ठीक है. दिस नेम जो अभी हमने स्कैन किया, ये नेम उस एरे में जो हमने ऑलरेडी स्टोर किए हुए नेम, उनसे कंपेयर किया जाएगा. दिस नेम विल बी कंपेयर्ड विद द ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यूज इन द एरे. जो हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन किया है, उससे हम इसको कंपेयर करेंगे. और if the two names are same, then this strcmp function will return 0. So here we are using many concepts studied earlier. String के आपने functions पढ़े थे strcmp, उनका ये आपका application है कि कहाँ पर आप इसे use कर सकते हैं. यहाँ पर इसका usage आया है. We have to compare, we have to check whether this particular name जो हमने यहाँ पर scan किया, this name exists in this array or not. Okay. If it exists, then we have to print all the data about that particular student. So if this is 0, if this is matching, then it will print the data. Otherwise, it will continue moving or traversing in the array. So just run it again. Just remember at least one name, QWER. Okay. Control S. Running बंद करिए. इसको हम name to search. Okay.
It is asking for the name. Which name we want to search? QWER was one of the names. Okay. If I am entering this name, you can see that it has printed name QWER, address जो भी आपने दे रखा है, age जो दे रखी है, and fees. So it has searched. If this name is not found in the array, so instead of printing here, what we can do, we can print this information when we are out of the array. Control X. मैं आपको एक कॉन्सेप्ट वाली चीज बता रहा हूँ, so just watch it carefully. The name may exist in the array or it may not exist. So if it is existing, then fine, you can come out of the loop and print the data. But if it is not existing, what will be the value of this comparison function? It will return some non-zero value. So how will you be able to check that this element has not been found? So what we can do, we can make another variable. एक हम और variable ले सकते हैं. We can name it as flag, and we may initialize it at 0. Okay. आप देख सकते हैं इस flag की initial value हमने 0 रखी, and flag is not any special variable. I have just named it flag because we will see the value of flag to print the output. Okay. So this is normal variable. आप इसको कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, लेकिन हमने जिस पर्पस के लिए इसे यूज किया है, so इसी तरह से उसका नाम दे दिया है. So if element is found in the array, then we will modify the value of flag. Flag अगर आपको एलिमेंट array के अंदर मिल जाता है, then we will change the value of flag to 1. Otherwise it will remain 0. We are not touching it. Okay. So आपको अगर एलिमेंट array के अंदर नहीं मिलता है, then it will remain 0. अगर ये कहीं पर भी मिल जाता है आपको, so it will become 1. One thing more, once you have found, जैसे आपको ये चीज मिल जाती है, अगर आपको array के अंदर मिल जाता है कोई भी नाम, then you need not check further. Once for example I entered QWER and I found it at location number 1. First element is 0 location and second element is first location. So we found our desired data at location 1. Then we need not go further. So we can stop and come out. So to stop, we can use break. आपने break पहले भी देखा था. Break can be used to come out of the loop. As you put the break statement, अब इस if से बाहर नहीं आएंगे, आप जो immediate for loop है उससे बाहर आएंगे. So we will immediately come out of the loop. तो आप loop से फौरन बाहर आ जाएंगे. जैसे आपको मिलेगा, आप उसी वक्त बाहर आ जाएंगे. So जो i की वैल्यू करंटली थी, जिस वैल्यू के लिए आपका ये कंडीशन ट्रू आया है, उसी वैल्यू को लेकर I will remain same. We are just abruptly terminating our loop. जैसे आपको डेटा मिल जाता है, आप उसी वक्त अपना लूप जो है तोड़कर बाहर आ रहे हैं. ब्रेक जो है वो इसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं. ब्रेक मतलब तोड़ना, तो आप इस लूप को ब्रेक कर रहे हैं. यू आर कमिंग आउट ऑफ द लूप एब्रप्टली. जैसे ही आपको डेटा मिलता है वैसे आप लूप से बाहर आया. तो आई की जो वैल्यू थी, सपोज इट वाज फाउंड एट 1, सो आई विल रिमेन 1. तो आपकी आई की वैल्यू जो है वो इट विल कंटेन एप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ द मेंबर जो भी आपने फाइंड किया है. ओके, सो वी विल चेक द वैल्यू ऑफ फ्लैग इफ फ्लैग इक्वल्स टू 1. अब हम यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू चेक करें. अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, देन वी विल प्रिंट द डेटा. एल्स व्हाट इज टू बी प्रिंटेड? S not found in the array. Print this message. इस मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं कि हम जिस नाम को ढूंढ रहे हैं एरे के अंदर, वो नाम हमको नहीं मिला. कौन सा नाम? दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द वेरिएबल नेम. अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है, इट मींस वी हैव फाउंड द नेम. अगर फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं है, इट मींस element the name was not found in the array. Okay, so just save it, Control S and run it. It's asking for name.
I'm giving ASDF as ASDF not found in the array and process terminated. Okay, run it again. रन अब आप पहली बार आप रन करते हैं तो आपको कंपाइल भी करना होता है, रन भी करना होता है. वंस योर प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड देन यू कैन डायरेक्टली रन. सो यू कैन प्रेस दिस बटन, run QWER, not found. As I have told you that the strcmp function is case sensitive. So the name QWER that we have mentioned in the data initialization of the array, there it was in capital letters, and here I have entered in small letters. So this is different, but you can say whether you write your name in capital letters or in a small letter, it should be treated as same. So for that purpose, you can make it case insensitive. So you can write strcmp I. This is insensitive, case insensitive. So it will consider both. Now you can run it again, save. Since you have changed, you need to compile it again. So we will press this button, QWER. Just check the output. Now it has printed the value. Okay. अब ये आपका QWER स्मॉल में और QWER कैपिटल में ये आपके डेटा जो है वो मैच कर गए. तो जैसे ही आपके डेटा मैच करता है तो इसने उस पर्टिकुलर डेटा के ऊपर एग्जिट कर दिया और बाहर आकर इसे डेटा को प्रिंट कर दिया. सो यू विल गेट एप्रोप्रिएट मैसेज वेदर द डेटा वाज फाउंड, देन इट विल शो द डेटा, एंड इफ डेटा इज नॉट फाउंड देन इट विल शो दैट द सर्च वाज अनसक्सेसफुल और डेटा नॉट फाउंड. एंड सिंस वी आर comparing our data with each element in the array, so this is called linear search. तो ये जो आपका प्रोग्राम है ये आपका लीनियर सर्च का प्रोग्राम है. हम यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, वी आर सर्चिंग द नेम. जो नेम हमने यहाँ से स्कैन किया था, आप देख रहे हैं ये मैसेज, ठीक है. यहाँ पर हमने एक नेम को एंटर करवाया और उस नेम को हम पूरे एरे के अंदर सर्च कर रहे हैं. नेम इज वन मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर. जो हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है उसमें और भी कई डेटा है, लेकिन हम उसमें सिर्फ नेम को कंपेयर करा रहे हैं. So name is a string. So to compare strings, we need to compare in this form. एक चीज और आप कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को मैं कमेंट बना दे रहा हूँ. You need to compare age. For example, you want to check a particular student with age, then you can specify some variable. Say you are comparing I with y I dot age. So this age being a basic data type, it can be compared directly. You can write I comparison के लिए आप double equal लगाएंगे. So you can compare it directly. जो integers हैं, age has been declared as integer or fees has been declared as floating point value. ठीक है. So these values or these basic data types can be directly compared. But when you are comparing composite data types, you have to do something else. For example, if you want to compare two strings, you have to compare it character by character. So for that purpose, a function has already been defined in the string.h library, and we are using that function, that is strcmp and cmpi. Similarly, if you want to compare two structures, that can also be done. But structures can be compared directly, as structures can be assigned, so they can be compared also directly. So this is all about our declaration of structure and array of structure, initialization of array of structure. So you can say what we have learned today. We learned today that what is the need of array of structures, okay, and how to declare array of structure, and how to initialize an array of structure. And structure and union are almost same, only they are different in concept. So they can be used interchangeably. Means जो कॉन्सेप्ट या जो चीज़ें मैं आपको यहाँ एरे के बारे में बता रहा हूँ वो यूनियन के बारे में. इसी तरह से आप यूनियन का भी एरे बना सकते हैं, यूनियन के भी एलिमेंट आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, और यूनियन को भी आप सर्च करा सकते हैं. ओके, सो वी हैव लर्न दिस थिंग कि आप कैसे एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं. एरे ऑफ यूनियन को भी आप ऐसे करेंगे, लेकिन एरे ऑफ यूनियंस को एक्चुअली इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एरे में सारे मेंबर्स जो हैं एक साथ वैलिड नहीं होते हैं. ओनली वन एलिमेंट विल बी वैलिड एट अ टाइम. सो यूनियंस नीड नॉट बी इनिशियलाइज्ड. ठीक है, आपको यूनियन को जनरली इनिशियलाइज नहीं करना होगा. माइक ऑन किया, माइक बंद कर दी. सो दिस वाज एक्चुअली नॉट नीडेड. बेसिक डेटा टाइप हो आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर बेसिक डेटा टाइप नहीं, देन यू हैव टू यूज सम फंक्शन.
यहाँ पर हमने strcmpi फंक्शन यूज किया था. So this was a program that this is also known as linear search. तो आपको एक एल्गोरिथम भी मालूम हो गई जो आप यूज कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. आपको डेटा देखना पड़ेगा किस डेटा को आप सर्च कराना चाह रहे हैं. यहाँ पर आपने एक यूजर डिफाइंड डेटा यानी कि स्ट्रिंग को सर्च कराया था, इसलिए आपको फंक्शन यूज करना पड़ा. अगर आप बेसिक डेटा सर्च कर रहे हैं, कैरेक्टर को या पर्टिकुलर इंटीजर को या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, तो आप आसानी से सर्च कर सकते हैं. तो ये आपका प्रोग्राम हो गया स्ट्रक्चर के बारे में. तो ये मैंने स्ट्रक्चर्स, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बता दिया आपको. Okay, so we will consider pointer on next turn. Pointer will be considered in some more detail. So we will consider this topic in next class. Okay. So this is end of today's class. We have discussed the arrays of structure and usage of array of structure. How we can use the array of structure, how we can define array of structure, how can we initialize, how can we search. So try to write programs. I have given you a quiz on based on unions. बल्कि मैं उसमें स्ट्रक्चर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर के भी उसमें कुछ सवाल इंक्लूड कर लूँगा. ठीक है, फिर मैं आपको एक क्विज और दूंगा उसके ऊपर. यू कैन डू दैट क्विज as quickly as possible. ठीक है. ओके, दिस इज एंड ऑफ अवर टुडेज क्लास. आप लोगों ने रोल नंबर ऑलरेडी एंटर कर दिया, मेरे ख्याल से सभी ने कर दिया होंगे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. एंडिंग इट. किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना? एनी क्वेश्चन? Okay, so I am ending the class.